भी किया हुआ है हिंडशिप पर्टिकुलर से, तो सर कौन सा यूज करेंगे सर हम? इन्होंने दोनों मेथड किए हुए सर, मतलब ए और बी देखिए सर। अच्छा, इन्होंने दोनों से कर दिया। ओके ओके, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। कैलकुलेट द टर्न एंड कैलकुलेट द एंगल ऑफ हील प्रोड्यूस्ड। सो केबी, ये तो इसमें तो जब एमवी हिंडशिप आ जाएगा तो यू विल नॉट डू केबी ड्राफ्ट बाय 2, you will find out the KB by the hydrostatic draft whenever MV hinship is given. ठीक है, ठीक है सर, मतलब मीन ड्राफ्ट लेके नहीं करना है? मीन ड्राफ्ट लेके नहीं करना है, नहीं। तो सो दैट इज पॉइंट नंबर 1। सो वो तो क्लियर हो गया। कैलकुलेट द एंगल ऑफ हील प्रोड्यूस्ड, सो इसने ए बी करके उसने निकाल दिया, वो ठीक है, तो दैट्स फाइन। फिर उसने ये ड्राफ्ट बाय 2 करके, तो आपकी कंफ्यूजन वहां पे आ रही है कि ये ड्राफ्ट बाय 2 करके क्यों कर रहा है, दैट्स योर कंफ्यूजन। ओके, नहीं करना चाहिए था इसको। ए ही है, ओनली ए, फर्स्ट मेथड, दैट्स ओनली वे, नथिंग एल्स। सर ये हाइड्रोस्टैटिक टेबल से ही निकालना पड़ेगा इसमें? ये आपको हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट निकालोगे और फिर हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट से टेबल्स में घुस के केबी केएम केबी निकालोगे, केएम निकालोगे, ओके वो सारी एंड डिस्प्लेसमेंट निकालोगे। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है सर पास पेपर। अच्छा, ये आ चुका है, ओके। सो देन उसका केबी केएम एंड डिस्प्लेसमेंट निकालोगे एंड देन जस्ट एंटर इनटू द फॉर्मूला। खाली वो जीएम फ्लूइड का याद रखना, वो फ्री सरफेस वाला पार्ट, वो याद रख लेना बस। और कोई डाउट, एनी अदर डाउट? नहीं सर, यही था सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड नाउ। अब हम रोलिंग में आ रहे हैं। तो अब हम रोलिंग में घुसते हैं। ओके, रोलिंग मोशन, अगेन ये टोटल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एंड रोलिंग मोशन is given of two types of vessels. One is called as small ships and the other is called as large ships. Large ships are vessels whose length is greater than 70 meters. These are considered as large ships. Small ships are vessels whose length is less than equal to 70 meters. तो ये जो छोटे जहाज हैं, इनको कई बार हम इस नाम से भी जाने जाते हैं, ये लोग coasters. They're also called as coasters. Because they remain around the coast. They trade around the coast.
So that's why they're called as coasters. So these small ships, इनका जो rolling period है, you have done one rolling period test in phase 1. Do you remember that? Timber ships में. Do you remember? Yes, sir. Rolling period test. So as per that rolling period test, the approximate GM of a vessel can be calculated by a simple formula, FB upon TR whole square. FB upon TR whole square, where F is known as the rolling coefficient. And this rolling coefficient varies from 0.73 to 0.88. 0.73 is for loaded vessel and 0.88 is for ballast vessel in ballast. This is known as a rolling coefficient. B is of course the breadth of the vessel in meters. TR is the time period of roll in seconds. TR is the time period of roll in seconds. That means if a vessel in upright condition goes to starboard, then goes to port, then comes back, this is one roll. So the time taken for one roll in seconds is known as TR, time period of roll. I repeat, starboard, port, and then midship. That is one roll. So the time taken by a vessel is known as TR, the time period of roll in seconds. So as per this formula, if I can, we know that the GM of a vessel is inversely proportional to the square of the time period of roll. Is inversely proportional. So अगर मैंने टाइम पीरियड ऑफ रोल अगर ज्यादा होगा तो जीएम कम है एंड वाइस वर्सा. टाइम पीरियड ऑफ रोल, सो देयरफॉर अगर टाइम पीरियड ऑफ रोल ज्यादा है जीएम कम है. जीएम कम है मींस वी आर टॉकिंग अबाउट अ टेंडर वेसल. So all the characteristics of a tender vessel will come in. This is the rolling motion of a small ship. सर ये जीएम फ्लूइड है. जब भी जीएम होता है तो वो जीएम फ्लूइड होता है. जब भी जीएम है और उसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब है जीएम फ्लूइड. ओके, अब लार्ज शिप में चलते हैं. लार्ज शिप में this formula cannot hold good because other parameters come into the picture. So for a large ship, the time period of roll follows a simple harmonic motion equation, and so therefore it follows a
formula like this. The TR is equal to 2 pi K over under root of G into GM fluid. Where, so this is a simple harmonic motion. Now, so over here, so why is it simple harmonic? It's very simple because it is constantly going to oscillate about its mean position and it will keep rolling like this. So therefore, it is called as simple harmonic. G small in this is acceleration due to gravity, 9.81 meters per second square. GM fluid, we know what it is, metacentric height. K is the radius of gyration or the constant of gyration. K is the radius of gyration or the constant of gyration. ये K का क्या मतलब है, gyration का क्या मतलब है? So basically अगर कोई let me explain the concept of this. So अगर कोई irregular shape है, supposing कोई डिस्क है irregular और ये उसके थ्रू की एक्सेस है, ओके, ये एक्सेस है, ये इसके अबाउट ये डिस्क मैंने लगाया और इसको मैंने राइट इसको मैंने फिरकी दी, तो ये जो डिस्क है ये इरेगुलर है, इसका मास इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो there is something called as center of mass. Okay, the center of mass will be located somewhere off centered from here. This will be called as center of mass. So कहने का मतलब ये है कि ये डिस्क है, इसको मैं चक्री की तरह घुमा रहा हूं अबाउट दिस एक्सिस, तो जहां पे इसका मास ज्यादा होगा या कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो उसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर है वो यहाँ पे कहलाएगा विच विल बी ऑफ सेंटर्ड फ्रॉम द एक्सिस वेयर आई एम टर्निंग इट, दैट विल बी कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ मास. And the center of mass will be at a certain distance away from the axis of rotation, and that distance at which the center of mass is away from the axis of rotation is known as the radius of gyration or the distance k. अब इस सब का हमारी शिप से क्या ताल्लुक है? बेसिकली ये तो हो गई थियोरेटिकल स्टफ. अब मैं प्रैक्टिकल पे जा रहा हूँ जहाज पे, तो सर केजी है ना, फिर हम केजी के हिसाब से देखना पड़ेगा. हाँ, तो अब मैं इसको लेके जाऊंगा अब जहाज की तरफ, तो मैं ये देखता हूँ यहां से, अगर मैं इस फॉर्मूले में देखूं तो मेरी इन्फ्रेंस पहली आती है दैट द टाइम पीरियड ऑफ रोल is inversely proportional to the square root of GM. Right. That means
stiff vessel description, tender vessel description, higher GM, low time period, right? That means stiff vessel, violent rolling, difficult for people to be on board, uncomfortable for people. Low GM, high time period, tender vessel, long durations of rolling. TR is directly proportional to the radius of gyration. That means higher the radius of gyration, more is the time period of roll. Lesser the radius of gyration, lesser the time period of roll. So basically, I've got a vessel and I've got, let's say, across tanks, port, center, starboard. मैंने पोर्ट और स्टारबोर्ड विंग टैंक्स में लिक्विड भरा हुआ है, वेट भरा हुआ है. That means my radius of gyration is more, my K is more, because my center of mass is going to be away from the axis about which this vessel is rolling. It is away from the rolling axis. So if I wish to reduce my TR, all I need to do is I need to transfer my weights. From wing tanks to centerline tanks. By doing so, I am reducing the K. The K is getting reduced. That means the radius of gyration is getting reduced. If that is getting reduced, TR, time period of roll, will be reduced. ये समझ में आया मैंने क्या किया है? हाँ जी, रिपीट कर दीजिए सर एक बार. ओके. सो मेरा बेसिकली, सपोजिंग मेरा बैलेस्ट विंग टैंक्स में भरा हुआ है, तो अगर मैं उधर से या जो भी वेट है मेरा विंग टैंक से, विच इज अवे फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस, उसको मैं ट्रांसफर करता हूं फ्रॉम विंग टैंक्स टू सेंट्रलाइन टैंक्स, तो मैं के को गायब कर रहा हूं या के को रिड्यूस कर रहा हूं? आर यू विद मी? यस सर. यस और सर. और अगर मैं के को कम कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं टीआर को कम कर रहा हूं. यस सर, राइट. So this is what I'm trying to do. Second, next option, I discharge the weights from wing tanks. Then also I'll be achieving the same thing. I just discharge the weights from wing tanks. Then also I'll be reducing K. If I'm reducing K, I'm reducing TR. Yes or no? यस सर. Next, I'll load weights in centerline tanks. Then also the effect is the same.
Are you with me? Yes, sir. One question हाँ जी, is बोलिए. there, sir. If we load more weight in the center tank, then the GM will increase, so the vessel will become tender. I mean stiff. नहीं. Vessel is stiff or tender is dependent on the height of the cargo, the weight that you load. Yes, sir, that is correct. मैं तो खाली athwartship की बातें कर रहा हूँ इस वक्त. Okay, sir. I'm just talking about athwartship distance. starboard extreme में था, port extreme में था, मैं D को reduce कर रहा हूँ. Okay, so the distance between मैं for the basically K. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल Okay, ठीक. तो मैं वर्टिकल की बातें नहीं कर रहा हूँ इस वक्त. मैं इसकी बात athwartship की बातें कर रहा हूँ. third ship distance. Okay. तो ये तीनों पॉइंट क्लियर हैं सबको? सर ये चीज पूछनी थी, ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेसल के लिए एप्लीकेबल है ये जो आपने बताई अभी तीन कंडीशन? नहीं, इसमें कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेसल नहीं है. ये बेसिकली कॉन्सेप्चुअली मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी चीज़ अगर मेरे विंग में है या इट इज डिस्टेंट अवे फ्रॉम द सेंटर लाइन, मैं अगर उस वेट को टुवर्ड्स द सेंटर लाइन मूव करता हूँ तो मेरा ये सारी चीज़ें अचीव होती हैं, चाहे कोई भी जहाज हो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टैंकर और बल्क कैरियर और रोरो और कंटेनर. मैं तो कॉन्सेप्चुअली बात कर रहा हूँ. इज इट ओके? Yes, sir. सो ये सारी जितनी भी हमने कहानी अभी तक करी है, इन सबको हम एक नाम देने का टाइम आ गया है, तो उसको नाम देते हैं अब. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अनरेजिस्टेड रोलिंग. इट इज कॉल्ड एज अनरेजिस्टेड रोलिंग. कोई रेजिस्टेंस के बिना ये जहाज की इनहेरेंट कैपेबिलिटी है उस मोमेंट की, उस कंडीशन की जो जिसमें मैंने वेट जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो उसकी ये अपनी इनहेरेंट कैपेबिलिटी है कि वो जहाज टॉस एंड टर्न करता रहेगा एट सी. तो ये अनरेजिस्टेड कहलाएगा. इज इट ओके? और ये ऑसिलेट भी करेगा. Okay, sir. ओके. अब इसको हम अलग अलग नाम दे सकते हैं. इसको मैं एक नाम और दे रहा हूं, अनडैम्प्ड रोलिंग. अब ये एग्जाम में ये अलग अलग नाम आते हैं, चीज वही है जो कराई, बट सो बेसिकली these are the different names of the same Maruti model. बेसिकली एक ही चीज के अलग अलग नाम है. एक नाम है अनरजिस्टर्ड रोलिंग, जो एग्जाम में लिखा हुआ आएगा तो ये चेप देना. दूसरा है अनडैम्प्ड रोलिंग. ठीक है? Normally, sir, ये short notes type का आएगा ना, sir, कि बिल्कुल explain. ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. राइट. एक्सप्लेन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय अनडैम्प्ड रोलिंग और अनरजिस्टर्ड रोलिंग. तो क्या लिखोगे? ये सारी कहानी जो अभी तक करी है हमने. So we will write both for the small vessels less than 30 and for big vessels, and then explain with the this formula and all. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रोलिंग इन स्टिल वाटर. ये इसका एक और नामकरण है, रोलिंग इन स्टिल वाटर रोलिंग. also called as
हार्बर वाटर रोलिंग। ये मैंने आपको अलग अलग नाम इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि ये सारे नाम आए हुए हैं एग्जाम में। मतलब बात एक ही चीज की हो रही है, लेकिन ये 4 अलग अलग नाम ऐसे दे दिए जैसे बड़े तोप हो गए। So is it also equal to say natural rolling period of the vessel? एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक, Same way. सेम चीज होगी, नेचुरल रोलिंग पीरियड, ये भी वही सेम बात आ गई। बिकॉज ये हमें ये समझना है कि जहाज की इनहेरेंट कैपेबिलिटी की बातें कर रहा हूं मैं। उस वक्त जब मैंने उसमें वेट डिस्ट्रीब्यूट किया तो वो जहाज अपने आप इनहेरेंटली रोल करेगा उस कैपेबिलिटी से। तो हार्बर सी में भी यही करेगा, हार्बर वाटर में यही करेगा। स्टिल वाटर मतलब कोई विंड ना भी हो तो भी ये रोलिंग करेगी, कर सकता है ये जहाज। अनडैम्प्ड रोलिंग, अनरेजिस्टेड रोलिंग, नेचुरल रोलिंग पीरियड, ये सब एक ही चीज के नाम है। इज दैट ओके? Yes, sir. ओके, चलो। सर यही रोलिंग पीरियड अगर वेव जो स्वेल है उसका पीरियड इक्वल हो हाँ। जाए नेचुरल अभी रोलिंग पीरियड, देन अब इट बिकम्स सिंक्रोनस रोलिंग। हाँ, अब वो उसको मैं अगली बार कराऊंगा समझाना है उसके लिए मुझे, मतलब अभी पहले इसको सिंक कर लो, हाँ समझा लो, फिर मैं उसको देन आई विल एक्सप्लेन दैट पार्ट। अब वो जब मैं इसी जहाज को मैं दरिया पे लेके जाऊंगा और इसी जहाज के ऊपर में वेव मारेगी, तो जब वेव मारेगी तो अब वो सिंक्रोनस में बदल जाएगा। ओके। जब इसकी रेजोनेंस और उसकी रेजोनेंस मैच कर जाएगी, जब दोनों रेजोनेंस में हो जाएंगे, यस सर, सेम फेज, तब जो है उस वक्त वो सिंक्रोनस में चला जाएगा एंड फिर वो लंबी रोल लेना लगेगा। ठीक है, चलो लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। आज थ्योरी का ज्ञान हो गया थोड़ा सा ज़्यादा, एंड सो बेसिकली प्लीज कम बैक अराउंड 12:45 और सो। दैट टाइम डैनियल सर को मैं, he'll be there inside the class around that time, ठीक है? And then I'll just organize Captain Manuraj Khera to just join in. उनको मैं जरा लॉग इन करवा लेता हूँ। ओके सर, ठीक है, ऑल राइट, ओके, सी यू देन। थैंक यू। जिन लोगों के पास में अभी मोबाइल में है लेकिन लैपटॉप घर में पड़ा हुआ है तो वो अपना लैपटॉप ले आओ प्लीज, जिनके पास में घर में पड़ा हुआ है लैपटॉप। और जिन लोग विंडोज 10 नहीं है सर, और विंडोज 10 नहीं है तो कुछ मत करो। और जिन लोगों ने अमेज़न में ऑर्डर किया हुआ है तो उसको थोड़ा एक्सपीडाइट कराओ जल्दी से। आज देख लेते हैं सर, फिर अरेंज कर लेंगे। हाँ, चलो जी, ओके, सी यू देन, बाय।